समझने जानने और बुझने और इस हवाले नाल कम करने कम क्या करने अज में हमारे मेहमान जिहड़े वो इस हवाले नाल एक्सपर्ट है सबसे पहले मैं वेलकम करना आई रियली वेलकम डॉक्टर जस्टिन वार्नी डॉक्टर जस्टिन वार्नी जिहड़े न ਉਹ बरतानवी महकमा पब्लिक हेल्थ जिहड़ा आ उसने विच डायरेक्टर है बर्मिंघम ने और कम्युनिटी क्लोज कम करने और एक्सपर्ट ही है डॉक्टर वार्नी वेलकम टू माय शो Thank you for having me. I'm delighted to be here. एंड उन्हां नाल हमारे नाल काउंसलर वसीम जफर साहब हमारे खिते आबाई खिते डडियाल नी पहचान है बरतानिया विच बर्मिंघम विच अल्लाह ताला काउंसलर वसीम जफर की लंबी उम्र दा लंबी इज्जत दा बड़ी इज्जत दा और एक खूबसूरत फैमिली नाल डडियाल नाल तल्लक और साडे वतन रियासत जम्मू कश्मीर ने बेटे साडे एम्बेसिडर इत्थे बरतानिया च काउंसलर वसीम जफर साहब वेलकम टू माय शो बहुत मेहरबानी और बड़ी मेहरबानी तुसां काफ़ी अच्छे अल्फाज याद किया हुआ और असा क्या दावत दी है शुक्रिया काशिफ भाई साहब थैंक यू तो दोस्तों अज ने जो प्रोग्राम है वो जिस तरह मैं गुजारिश की सी इसकी तो शेयर करसो अपने ज्यादा वॉल्स पर और बिलखसूस जेडे बरतानिया विच दोस्त अहबाब तकने पे मुख्तलिफ चैनल्स पर मुख्तलिफ पेजेस पर एक तो दूर दूर ज्यादा शेयर करसो ताकि पता लगे बाकी दोस्तों की भी असा किसने पर गल करने पे काउंसलर वसीम जफर साहब जेडे ने जेड़ा साढ़े वास्ते आसानी पैदा की है या करसन जेड़ा कि डॉक्टर जस्टिन जेडे ओ जेकी गल करसन उन्हां नाल थोड़ा बहुत तर्जमा जेड़ा मैं भी करसन कोशिश और काउंसलर वसीम साहब भी कोशिश करसन कि असां की ज्यादा मालूमात होवे बिलखसूस ओ लोग जेड़े कि अंग्रेजी जेड़ी है उन्हां वास्ते नॉट ए फर्स्ट लैंग्वेज Dr. Justin, I start from yourself. And first of all, I'm really pleased and very delighted. It's an absolutely pleasure to have you in my show. Um, because currently we are facing a huge challenge in our community and in whole country as well. Can I begin, by starting by saying that can you tell us what is coronavirus? What is actually, so we know basic things about it? Sure. So the coronavirus family is a family of viruses that can cause illnesses in animals or in humans. And in humans, there are lots of different types of coronaviruses. Some of them cause things like the common cold. Some have caused outbreaks like SARS or MERS, which were both part of the coronavirus family. And the type of coronavirus going round at the moment is a variety called COVID-19. And it causes severe respiratory lung problems, particularly. And that's what we're most worried about at the moment. Right. So, Councillor Wasim, can I basically say or ask कि ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਜਾਂ ਮੀਰਪੁਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣੇ ਵਾਲੇ ਪਠਵਾਰੀ ਬੋਲਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ because you work in public office you go around with people interact with people ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ क्या फील करने हो कि ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है या असां जेड़ा फील करने कि यू फील कंफर्टेबल के असां की पता है हुन जेड़ा पता लगी गया और मजीद इसमें अवेयरनेस देने की जरूरत है देखो शुरू विच बहुत कम अवेयरनेस सी और अफसोस होना सी कि बंदे इसकी मजाक समझने सन कितनी सीरियस बीमारी जी असा की पूरी दुनिया विच फैली रही है बड़ी तेजी नाल फैली रही है कोई लोग पहले मजाक समझ सन लेकिन पिछले चंद हफ्तियां विच बिलखसूस जिस वेले ने ब्रितानिया ने हुकूमत ने लॉकडाउन इत्थे यूके विच कीता हुआ उन्हें लोगों की ज्यादा एहसास होया हुआ और इंफॉर्मेशन भी ज्यादा उन्हें पुजी गया लेकिन और इन्हों विच काफी मतलब के अदारियां ने भी बड़ा रोल है और तुसां ने चैनल और इस तरह के सोशल मीडिया जी एक्टिविज्म और मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी बहुत बड़ा रोल है इंफॉर्मेशन की पहुंचाने ते इस वजह नाल अज असां भी तुसां ने रिक्वेस्ट की सी गुजारिश की सी और मेहरबानी तुसां ने कि तुसां अज असां की अपनी प्लेटफॉर्म ने जरिए ये मैसेज पहुंचाने वास्ते मौका दिता देखे कि असां काफी कम करी रहे हैं एज अ काउंसिल मुख्तलिफ इदारे हेल्थ इदारे NHS ट्रस्ट और गवर्नमेंट के
कि क्या वजह है कि कई कम्युनिटियां की कोई शायद ज्यादा कोई प्रॉब्लम इस नहीं पैनी पी है एक जरा इशू अचना पिया है कि जिन्होंने लैंग्वेज इंग्लिश नहीं जिन्होंने जबान पहली जबान इंग्लिश नहीं है कि शायद उन्होंने इंफॉर्मेशन उस तरीके नाल नहीं पुजना पिया और तक प्राइम मिनिस्टर आर घरा विच खत भेजिया वै पूरी इंग्लैंड विच बड़ा खर्चा आया करोड़ों ने साहब खर्चा आया और वो बहुत अच्छा एक इकदाम सी गवर्नमेंट की तरफों इंफॉर्मेशन पहुंचाने वास्ते लेकिन जिन्होंने लोगों की इंग्लिश नहीं पढ़न होनी उन्होंने वास्ते तो बड़े मतलब कि उस खत का कोई फायदा नहीं सी सो तुसा ना इस क्वेश्चन जवाब देना कि पहले तो काफी लोग अगाह हो गए लेकिन मैं समझना कि अग्गे भी बहुत ज्यादा जरूरत है और इंफॉर्मेशन असा पहुंचाने नहीं और बिलखसूस है जरा माह रमजान का महीना आई गया एह् अज्ज शुरू होया वै सारे की रमजानी मुबारकां भी होन इत्थै असां की थोड़ा जा ज्यादा एहतियात करनी पैसी कई बंदे सोचने पे मौसम ठीक हो गया गवर्नमेंट आखनी भी असां पीक पर पुज्जी गए अस हाइट पर पुज्जी गए तो अग्गे आसान हो गया बिल्कुल नहीं अग्गे चंद हफ्ते असां की और जिस तरीके नाल पिछले दिनें विच असां पूरे लॉकडाउन विच एहतियात करने बाहर ना जाने अनलेस कोई इमरजेंसी होवे इस तरह असां की चंद हफ्ते और इस तरह रहना पैसे और इस रमजान विच ना असां मस्जिद भी जाई सकने नमाज पढ़ने ते ना तरावी पढ़ने ते इफ्तारियां और सहरियां भी अपने घरां विच करनियां पैसे ने बहुत मुश्किल वक्त असां वास्ते गुजरी जा लेकिन इस कोरोना वायरस नाल जंग लड़ने वास्ते असां की ये इकदाम उठाने पैसन कोशिश करनी पैसी मेहनत करनी पैसी हर एक दूए की हिदायत देनी पैसी बड़े निक्के सारे की मुतफिका होता है इस तरह जी गवर्नमेंट और जो इदारे असा को रिक्वेस्ट करने पे उसने असा की रिस्पेक्ट करनी पैसी और इस रमजान विच बिलखसूस असा की कोशिश करनी चाहिए है कि इबादत करो कार करो बेहता फैमिली नाल बेहता इबादत करो और दुआ करो कि अल्लाह ताला असा की हिम्मत देन कि इस कोरोना वायरस नाल असा मुकाबला करी सको आमीन थैंक यू दोस्त अहबाब जेडे तकनीन पे whoever's watching if you have any question any comment you like to make you know and if you have any suggestion please do let us know people start commenting as well they just said Amin to you as well thank you brother Muhammad Khan thank you very much and anybody else there are a number of other people watching as well if you have any question please do let us know Dr. Justin next question will be which is for my own knowledge as well how does this coronavirus basically spread you know across the other people across the other community or across the country because obviously most people want to know so the coronavirus spreads in the small droplets that we cough or sneeze out of our mouth and those droplets either landing on a door handle or an object which we then touch and then we get the virus on our hands and we touch our face and the virus gets across our face into our mouth up into our nose or into our eyes and the virus then can get into our body and grows and makes us very unwell but it is because of when we go out and we mingle with each other we're exposed to those droplets that we might go from our mouths onto something that we touch and then it's the not washing our hands properly that is the risk of the virus spreading when we touch our face and that's how it gets into our bodies. So now the next question will be how can we fight with it? How can we prevent ourselves? That's a really important point, I think, because now we know we establish that how it spread, but the next thing we need to find, obviously, how can we prevent ourselves? So there are several things that we can do. So first is to stay at home as much as possible. If we stay in the houses in which we live, with the people we live with, and only go out for short periods of exercise or to do essential shopping, or if we're doing essential work, if we work in social work or as a nurse or a doctor, for example. But otherwise, to stay at home reduces our risk of coming into contact with someone else. We must wash our hands more frequently. That is really important. The germ gets into our bodies by our hands touching our faces. So washing our hands when we come into the house, washing our hands before we touch our faces is important. And if we do have symptoms,
a cough or a high temperature, then we must stay at home, and everyone in the house must stay at home. And we must make sure we use a tissue to catch the virus if we cough or sneeze, and that must go straight into a bin in order to kill the virus and not spread it. So those are important things to help you stop catching the virus and stop you spread the virus. The other is it is important to look after your own health and make sure that you are as healthy as you can be, so that if you do catch the virus, you are in the best health to be able to fight it. Thank you, Dr. Justin. Wasim Zafar Saab. Now, जिस तरह spread होना है, असां ने अपनी जिहड़ी कम्यूनिटी है, मैं पढ़ना सपिया एक रिसर्च पेपर, उसने विच ये दस्सिया गया कि असां जिहड़ी एशियन कम्यूनिटी और बिलखसूस स्पेशली जिहड़े मुसलमान कम्यूनिटी, असां मोर वनरेबल हां. वी आर इन मोर challenge facing in terms of number of things. For example, साड़ी जिहड़ी सोसाइटी है, असां उसने विच बड़ा मिक्स होने आ. कॉमनली असां चीज़ां इस्तेमाल करने आ, कॉमनली घरां विच रहने आ. तुसां क्या सोचने हो कि ये वाकई सही है कि असां जिहड़ा आ हाईली रिस्क हां इसने अग्गे? देखो, जैसा डॉक्टर साहब ने दस्सिया कि ये बीमारी एक बंदे तो दूए बंदे जानी है. असां जिसलै खंघने आ या असां निच मारने आ या सींड असां ने कुदरै कुसै प्लेटफॉर्म पर कोई टेबला पर डायरेक्ट भी ना बंदे जाए, कुसै टेबला पर लगा जाए, कुसै वॉशरूम च कुसै फैसिलिटी च लगा जाए, तो दूसरा बंदा अच्छी उसी हत्थ लै और फिर उसने अपने मुंह के हत्थ लै, नक्का हत्थ लै, अक्खां हत्थ लै, ते इस तरह ते बीमारी फैलनी है. ते जिस तरह तुसें दस्सिया काशिफ भाई कि असां ना एक सिस्टम है, कल्चर है कि असां मुख्तलिफ जनरेशन एक घरै विच रहने आं. असां ये आदत है कि अपने वालदेन और वालदेन अपने दादे दादियां नाने नानियां इन्हां दी कोशिश असां दी होनी है कि असां इन्हां की इन्हां लुक आफ्टर करा. एक असां रवायती कल्चरल एस्पेक्ट है और अच्छा एस्पेक्ट है कि असां अपने बड़े वडेरियां दी हमेशा खिदमत करने. और कई बारी इस तरह होना कि 3 या 4 जनरेशन एक घरै विच रहने. असां अक्सर बड़े घरां विच रहने आं, बड़ियां फैमिलियां कट्ठियां रहनियां न. असां जिसलै कोई खाना किसे ने पकाने, असां 1-2 बंदे नाल पकाने, असां 20-25 बंदे नाल असां खाना पकाने. असां जेह्ड़ा एक्सटेंडेड फैमिली कल्चर है, असां कुंबा कबीले ने जेह्ड़ा सिस्टम है, एक अच्छा सिस्टम है. इसने विच असां एक दूए नाल असां प्यार और मुहब्बत करने आं, लेकिन एक दूए नाल मिलना ज़्यादा है. असां नमाज पढ़ने आं ते जिसलै जुम्मे दी नमाज होनी, हज़ारां दी तादाद होनी, ते अक्सर जेह्ड़ियां 5 नमाज़ां होनियां न, उन्हां विच हर मस्जिद च पढ़ियां होनियां न. असां एक दूए नाल इंटरेक्शन रखने आं, असां मिलने आं ते कई बंदे ते दुरूद सलाम देने, असां पंजां ते जफ्फी भी लाने आं. ये भी असां दा कल्चर है. लेकिन इसने विच वल्नरेबिलिटी इस बीमारी की फैलने ने वधनी है. तो लिहाजा अत की असां की बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए. जैसे डॉक्टर जस्टिन ने आखेआ कि जिसलै कुसै एक घरै विच किसै बंदे गी किश अलामात आई जान, कोई उ'नें की खांसी ने कोई प्रॉब्लम होऐ, बुखार होई जाए, तो उ'नें की नहीं सिर्फ घर रहना पैसी, उन्हां दी तमाम फैमिली जेह्ड़ी उस घरै विच रैह्ने, जेह्ड़े लोग उस घरै च रैह्ने, उ'नें गी घर रहना पैसी. क्योंकि थ्रेट है कि एह् बाह्र जाई ते तुस कुसै होर गी मिली कम्मै पर जासो या किधरै होर किधरै कुसै नाल सोशल इंटरेक्शन होसी ते एह् बीमारी फैली सकदी है. सो इस बीमारी की जेह्ड़ा लॉकडाउन भी होया, सिर्फ इत्थै नहीं पूरी दुनिया विच इस हाल ही है. लॉकडाउन ही है और एक दूए सोशल डिस्टेंसिंग ही है कि इस बीमारी की रोकेआ जाए, ताकि हेल्थ जेह्ड़ी सिस्टम है असानी जिसलै ओह् बंदे जान, ओह् एह् बोझ चली सकै कि इतने बंदे कट्ठे बीमार हो. जे मसलन कि अद्धा बरतानिया कट्ठे हो बीमार होई गया, ते अस्पतालां दी बेड्डां क्या उत्थै अस्पताल दी जगह ही कोई नहीं होनी है किसे वास्ते. सो लिहाजा इसकी स्लो करने दा होर मकसद सी. True. Justin, obviously, what Wasim saying and what you're saying, basically, we need to be more careful within the, we need to maintain our personal hygiene. We need to maintain our, home cleanness. We need to do more deep cleanness and everything. That's fine. But Justin, about this coronavirus, when is the vaccine likely to be coming out in public sector for the public, basically? So there is across the world many companies working together to try and develop a vaccine. Ultimately, until we have a vaccine, we will not go back to normal, because this virus is too dangerous, and particularly for older people or people who have existing health conditions, it can be very serious. Vaccines normally take about 2 years to develop. With all the effort that is being put in, trials are starting now.
And we have to remember this virus only appeared in December in China. So we're still, this is really very quick. But I do not expect we would see a vaccine available until probably the end of the year, until December, possibly January, unless we are very, very lucky. So, Brother Wasim, if you can translate that in our own. ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ ਭਾਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਕਿਤਨੀ ਜਲਦੀ ਆਈ ਸਕਣੀ ਹੈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੂਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਚੰਦ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕੰਮ ਕਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਦਵਾਈ ਲੋੜਨੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗੀ ਜਾਣੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਈ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਉਸਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੋalition ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਕਸਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨੇ की बड़ा रिस्क होना वा नवी वैक्सीन का लेकिन कल मैं टीवी पर देख ही रहा सा कि कल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जी वैक्सीन जी तैयार करी रही है टेस्ट कर वो बंदियां विच टेस्टिंग शुरू होगी है ज़ाहिर बात है वो काफ़ी टाइम लग सी उसने रिजल्ट लिखने के महीने बाद उस बंदे क्या असर पैना दूए महीने बाद क्या असर पैना गवर्नमेंट ने जी ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है कि उन्हें की उम्मीद है कि बहुत जल्दी होया तो सितंबर तक शायद ये भी ना मैं आखना कंक्रीट शायद कि कोई वैक्सीन आई जाए दुनिया में और भी इंडिया में काफी कम हो रहा चाइना में काफी कम हो रहा अमेरिका में हो रहा यूरोप में हो रहा इटली ने भी साइंटिस्ट बहुत ज्यादा कम करने पे उम्मीद है कि जल्दी कोई वैक्सीन आई जैसी लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं है हफ्तियां नहीं गेम नहीं है ये महीनियां नहीं गेम है तो कुछ लोग तो आने के 18 महीने भी लगी सकने और जब तक वो वैक्सीन ना आई सी असा की अपनी लाइफ जिस तरह प्री 2019 जिस तरह खत्म किया सी जिस तरीके ना असना सिस्टम सी जिस टुरने फिरने सा जब तक वैक्सीन ना आई सी असा उठा उस सिस्टम च वापस ना जाई सके शायद कई बंदे ते आने कि उठा तो वापस जाना ही ना कि थोड़ी बहुत चेंजिंग लाइफ विच तकरीबन आई गई है लेकिन एक काफी टाइम लगी सकना और लेकिन काफी कम हो रहा है तसल्ली की गल है कि बहुत हाई लेवल पर कम हो रहा है बल्कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जी टीम है उथे मैं पिछले दिनों में किसी सोशल मीडिया तक है कि उन्होंने एक टीम विच असने अपने डडियाल ने एक बेटी भी पलथी नहीं शायद वो उस टीम विच शामिल है और कम करी रही है आई थिंक एज एन एडमिनिस्ट्रेटर को उस टीम विच हिस्सा करी रही है बहुत अहम हिस्सा करी रही है और खुशी की गल है कि असने लोग भी इस कम में शामिल हुए हैं असा वसीम भाई असा उन्हें की ट्राई की है अप्रोच करने नी और होपफुली वंस एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्वियसली शी वर्क्स एज अ टीम जिस वक्त उन्हें की इजाजत लभी था वो अच्छा नहीं था प्रोग्राम विच भी and then असा एक गठिया प्रोग्राम करसा हूं basically it is going to be our own language as well as same as English ਤੇ मैं उसने कोशिश करसा कि पता लगा कि असन लोगों की जी होप है उम्मीद है या कुछ जियां प्रोग्रेस हुई है उसने बारे भी पता लगा so this is really important Justin when is the lockdown likely to be lifted that's the question and that's the answer we all want to know you might know Yeah, no, it's the question I get asked most. And if I had an answer and I was a gambling man, I would be very rich by now. Or I would be certainly rich in a couple of months. The lockdown will be released around the world at different stages. And that's because it is dependent. It depends on how the infection is spreading in a country and how rapidly it is spreading. So all of the things that we are doing to stop people leaving the houses they live in are designed to try and reduce the spread of the infection to ensure the health service can cope. Certainly in Birmingham, my view is that we will be unlikely to see relaxation of lockdown until the end of May, potentially into the beginning of June. And when relaxation of lockdown does come, it will be very, very small steps because
the risk is if we open the door too quickly and we all rush to see our family and our friends, that we will suddenly get many new cases and a second peak, and many people will die that did not need to die if we were more cautious. So I think probably the end of May, beginning of June, but likely to be very small steps. And it will be, I'm afraid, a long time before we will be able to gather in large numbers, whether at mosque or in theatres or to watch football matches. It will be a long time before that is safe to happen, and probably not until we get the vaccine. ਭਾਈ ਵਸੀਮ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਡਰਾਈ ਵੜਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਬਈ ਵਾਕਈ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਇਹ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਅਸਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਡਾਲ ਵਿੱਚ, ਟੁਰਨੇ ਫਿਰਨੇ ਵਿੱਚ, ਬਹਿਣੇ ਖਲਨੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਏ ਸੀ। ਤਬਦੀਲ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ एकदम ना करी सका जिस तरह असा पहले करने सा। मैं ठीक समझा भाई वसीम या मजीद बिल्कुल ठीक तरीके ਨਾਲ ਬਾਸੋ? जैसा डॉक्टर साहब ने दसिया हुआ है कि इस वेले जी इथे ब्रिटानिया विच लॉकडाउन है, गवर्नमेंट 7 मई तक उन्हां ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ क्या करना ने 7 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਇਹ ਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ ਕਿ 7 ਮਈ ਉਹ ਆਖਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿਣੇ ਸੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਦ ਅਦਾਰੇ ਉਹ ਖੋਲੀ ਹੋਣ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਲੋਕਲ ਇਕਾਨਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਚੰਦ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਰਿਸਕ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਖੋਲੀ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਬੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ। मैं फुटबॉल अक्सर तकने जाना, मैं इत्थे लोकल क्लब ना सीजन टिकट ऑर्डर में 40,000 बंदा उत्थे इत्थे इकट्ठा होना। बड़े इस तो भी बड़े ग्राउंड्स हैं। ये गल्लां जिहड़ियां बड़े ग्राउंडां विच बंदे इकट्ठे होण, म्यूजिक शोज होण या असां मस्जिदां विच या गुरुद्वारे विच या चर्चां विच जाई ते इकट्ठे होसां बड़ी लेवल विच। ये जब तक वैक्सीन ना आई सी और वो हर बंदे की ना पुछसी, वो बड़ा लो चांस है कि इस तरीके ने असली लाइफ वापस आई सी। सो ये निक्कियां छोटे स्टेप्स विच ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲਣੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸਾਂ ਪੀਕ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਪਿਆ ਵਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕਮ ਹੋਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੋਤ ਹੋਣੇ ਪਏ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣੀ ਪਈ। ਸੋ ਅਸਾਂ ਬਿਹਤਰੀ ਤਰਫ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਖੁੱਲੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਸਨ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਖੁੱਲ ਸਨ, ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਸਨ, ਕਾਲਜਾਂ ਖੁੱਲ ਸਨ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀ ਜਾ ਸਨ। ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਆਸਤਾ ਨਾ ਸਟੈਪਸ ਹੋ ਸਨ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੋ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪੀਕ ਗੁਜ਼ਰੀ ਅਸਾਂ ਮਸਲਨ ਕਿ 18,000 ਬੰਦਾ ਫੋਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਐਸੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ 18 ਤੋਂ 20,000 ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਫੋਤ ਹੋ ਜਾਏ। We have to be very careful about that. Justin, so the question will be, is this virus or corona, whatever we can call COVID-19, is he impacting one community more than to other community, or is it equally treating to everyone? So there's a lot of research going on about that at the moment, both in Birmingham and nationally in the UK. We've been looking at the data to try and understand it, and there's now enough people who have been sick with coronavirus to be able to get a bit more understanding. One of the important things to understand is that when we look at that data, what we try and do is not just look at ethnicity, age, or gender. We also look at whether people have got long-term conditions like diabetes and high blood pressure as well. And when you put all of those factors together, then you tend to see that what's most important in terms of risk is being more elderly, so particularly people over the age of 80, and people who have got long-term conditions like high blood pressure and like type 2 diabetes. And we know that in many of our ethnic communities, diabetes and high blood pressure are more common. So particularly in many of our Pakistani, Indian, Kashmiri populations, for example, those conditions are more common, and so those communities are more represented. But this is more about the patterns of those health conditions than it is about people's ethnicity. But there is
ongoing research, and it is still, I think, too early to say whether there are particular communities that are affected because of their ethnicity. But at the moment, the picture suggests it is more about people's existing health conditions, and some of those are not as well managed, perhaps, and not as well looked after in some of those communities, and that makes them more vulnerable to becoming sicker if they get coronavirus. Thank you. So वसीम जफर साहब, जिस तरह डॉक्टर साहब बाणन के वाकई जिस तरह असां गल करने सां पे कि प्रॉब्लम जिहड़ी है कम्युनिटीज की भी है, अक्रॉस द बोर्ड सारे की है, लेकिन माड़ी जिहड़ी समझ आ ये है कि जिस तरह असां पहले गल करने सां कि असां जिहड़ी एशियन कम्युनिटी और बिलखुसूस असां मुसलमान अपने जिहड़े इत्थे कम्युनिटीज न, साढ़ा जिहड़ा रहन सहन दा तरीका है, मिसाल के तौर पर साढ़ा दूआ घर है, उत्थे साढ़े ताया और भी रहने, मैं अपनी गल करना है, ताया और रहने, उन्होंने पुत्र भी रहने, फिर अग्गे पोतरे भी रहने, ठीक है, यानी कि असां 3 जनरेशनां जिहड़ियां इक घरै ने को रहनियां, भावें 6-7 बेडरूमां होई जाए, लेकिन घर तां इक है ना, उसने विच सारे असां एक दूए नाल मिलने मिलाने आ, बहने आ, रोटी टूला गठियां खाने आ, सब कुछ होना। अब दूसरा जिहड़ा सवाल आ कि असां जिस तुसां पहले फरमाया कि असां जिहड़ा मिलने आ जफ्फे तो बगैर तां असां रहने कोना, पंजा तां सट्टां ही सट्टां, फिर इसने तो बाद असां घर हांडी जिहड़ी है सारे ने इकट्ठी होनी है, असां रकाबियां प्लेटां जिहड़ियां न ओह भी गठियां घर रखियां होनियां, सारे गट्ठे बेत खाने, असां समझने आ कि इसने नाल वैसे भी असां ने घरां विच अच्छा समझा जाना कि सारे गट्ठे बेत टूला रोटी खां, ये भी अच्छी चीज है। नमाज पढ़ने आ, मसीती जाने आ, उत्थे भी मस्जिद च असां इकट्ठे होने आ, घर अगर नमाज पढ़ां तां भी एटलीस्ट जमात वास्ते असां की 2-3 बंदे ते चाहिए होने। सो इस सारे जिहड़े चैलेंज है, जिस तरह डॉक्टर साहब फरमाया कि असां की इसकी मैनेज करना पेसी, क्या बाणे जी इस तरह मतलब है किस तरह मैनेज हो सी, क्या कोई असां की अग्गे वधना पेसी किस तरीके नाल? वैसे में असां वास्ते बहुत बड़ा इम्तिहान है, असां इस इम्तिहान तो असां गुजरी रहे हैं। जिस तरह दस्या अग्गे भी गल हुई है, असां एक कल्चर है, एक खूबसूरत कल्चर है, लेकिन ये जिहड़ी बीमारी है कोरोना वायरस, इसनी ये असां की ज्यादा मुश्किलात तां पैदा असां वास्ते होने पे कि ये एक बंदे तो दूए बंदे ये अग्गे जानी है, ये डायरेक्ट भी नहीं जाई सकनी, लेकिन एक बंदे दूआ बंदा कोई निच गुजरा टेबल पर करी ओड़ा या वॉश बेसिन करी ओड़ा तो दूआ बंदा जाई हत्थ लाए, उसकी ये प्रॉब्लम पैनी है। इस तो वधित है जिहड़ी ज्यादा जिहड़ा डॉक्टर साहब ने दस्या कि अज डेटा कट्ठा होना पे, नवी बीमारी है, मुख्तलिफ अदारे चेक करने पैन कि इत्थे क्या पैटर्न्स न, क्या लिंक न, ज़ाहिर बात असां भी परेशान तकने आ कि हर त्रीए ध्याड़ा कोई ना कोई मुसलमान या एथनिक माइनॉरिटी डॉक्टर या नर्स फोत होनी है, हेडलाइन न्यूज़ होना है, ते असां ने लोकां विचों ज़्यादा फोत होने पे। और असां जिल्लै जदों भी फेसबुक खोलने आ, 2 हफ्ते पहले बिल्कुल जदों भी फेसबुक सवेला खोलना चाहिदा कोई ना कोई अपना वाकफ अल्लाह ना प्यारा होई जाना सी इस बीमारी दी वजह नाल, परेशानी होनी है इस वजह नाल। लेकिन एक की पैटर्न जिहड़ा अचना पे, एक तो है कि उम्र ज़्यादा होवे, जिन्ना बंदे दी उम्र ज़्यादा होवे, ज़ाहिर बात उम्र ज़्यादा होवे, कमज़ोर होना बंदा, वो जिल्लै बीमारी लगनी है वो फाइट नहीं करी सकने, उन्होंने अंदर जिस्म फाइट नहीं करी सकना। दूसरी गल है कि हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, ये हर त्रीए बंदे विच है। मैं तुसें दस्सना, मैं खुद टाइप 2 डायबिटिक हां काफी अरसे नाल, जो हमारी उम्र 40 साल भी नहीं हुई है। असली कम्युनिटी विच टाइप 2 डायबिटीज ये बहुत बड़ा इश्यू है, और हाई ब्लड प्रेशर, और जिहड़ा एक पैटर्न सामने अचना पिया, जिहड़ी अर्ली साइंस ने कि जिन्हां बंदे की हाई ब्लड प्रेशर और टाइप 2 डायबिटीज है, वो ज्यादा वनरेबल ने इस बीमारी में। तो वो असली कम्युनिटी असेंगी पता है गया कि साउथ एशियन कम्युनिटी जिहड़ी है, इंडियन, पाकिस्तानी, कश्मीरी, बांग्लादेशी, उन्हां विच ज़्यादा बीमारी होनी है, क्योंकि असां दा खान पीन भी ऐसा है कि फ्राइड फूड ज़्यादा चलना, फास्ट फूड ज़्यादा चलना, फिर एक्सरसाइज भी जिस तरह करनी चाहिए है वो नहीं होनी है। ये फिर ये प्रॉब्लम जो असां दी कम्युनिटी में ज़्यादा है, और इस बीमारी तो ये वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है। सो असां की ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए है कि एक्सरसाइज थोड़ी जी करा। गवर्नमेंट इजाजत देनी है कि कोई बाहर चो जाओ तो उन्होंने रिकमेंडेशन है कि 10,000 स्टेप्स रोजा नहीं करो, जो आजकल आईफोन और वगैरह फोन जो सो कि ट्रैक करी देने के कितने सो की एक्सरसाइज जरूरी है। दुआ खान पीन पर थोड़ा कंट्रोल करो कि अपनी शुगर कंट्रोल करो। और एक और अहम गल मैं काशिर साहब आखना चाहना, रोजियाना महीना आई गया, मैं एक और रोल भी मेरा है काउंसिल तो अलावा, मैं एक हॉस्पिटल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हाँ। तो हर साल रमजान ने पहले दिहाड़ियां विच उत्थे असां ने खास तौर बुजुर्ग जिहड़े ना वो अस्पतालां विच ज़्यादा दाखल ने, इस वजह नाल कि उन्हां दी बॉडी हिम्मत नहीं देनी है कि वो रोजा रखन
ਉਹ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਹੋਣੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ करसन कि असा रोजा रखा। नेक लोग ने कोशिश करने, लेकिन इस्लाम भी ये इजाजत दे रहा है कि कोई बंदा बीमार हुआ है, उसकी एक ऐसी कंडीशन हुआ है कि रोजा रखना, वो भी 17-18 घंटे ने, आजकल गर्मियों ने रोजे नहीं था यूके विच, उन्हें की इजाजत देना है कि तुसा कोई चैरिटी विच डोनेशन करी ओड़ो, तुसा सदका देई ओड़ो, लेकिन तुसा रोजा ना रखो, क्योंकि और खास तौर इन्हां ध्याड़ियां विच तुसा टाइप 2 डायबिटिक हो, तुसा रोजा रखी तो अस्पताल दाखल होई, तुसा सेहत खराब होएगी, अग्गे कोरोना वायरस दा रौला पिया, ते थोड़ी जी असें जाहिर है की एहतियात करनी नाली साढ़ा मजहब पवेगी। जड़ा आ बड़ा खूबसूरत मजहब है अल्हम्दुलिल्लाह, और असां बड़ी खुशकिस्मत हां अल्हम्दुलिल्लाह। कि उसने विच कंसेशंस दियां एग्जेम्पशन दियां, बिल्कुल। उसने विच जड़ा आ असां की बीमार हो, प्रेगनेंट है कोई औरत, कोई बच्चा आ जड़ा या बच्ची जेड़ी अडल्ट एज विच नहीं है, इसने तो अलावा बेशुमार बीमारी दी हालत है, टीके लगने न, इंजेक्शन वगैरह लगने न, तो अल्लाह ने बड़ा शुक्र है असां ने इस मजहब पर कि असां की कम अज कम आज़ादी है कि पिछे हटी जाओ, मुड़ी जड़ा या फिर रखी कि जिले सेहतमंद हो सो, ठीक हो जासो, फिर इसने तो अलावा कुफारा अदा करी कि नो, ये सारियां चीज़ां मौजूद ही जी, तो असां जी, जी, की बिल्कुल। यकीनी तौर पर जड़ा या इसने पर अगले प्रोग्राम विच किसा बड़े आलम दीन जेड़े उन्हां की आन सा, वो भी असां की रहनुमाई करसन इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कि असां इस हवाले नाल क्या करां। Dr. Justin, the question to you next will be, what is the short, medium, and long-term goals to defeat this coronavirus? So the goal, the fundamental goal, is to save lives. Everything that we are doing in the city of Birmingham, in the UK, and in many countries across the world is focused on two things. One, that we will save as many lives as possible, and two, that we will ensure the future of society, and that's to ensure that people have jobs to go back to, and that the city continues to move forward. So those are the two things that we're focused on. In terms of the what we're doing at the moment with lockdown, this is about trying to ensure that the NHS, the health service, does not get overwhelmed by trying to slow the spread of the virus. As we start, and that seems to be working, but it's still early days. Then as we release lockdown slowly, the idea is then to manage the spread of the virus, so that the health service can still cope, and that we don't see the large numbers of death rise. In the long term, when we have the vaccine, that will stop the spread of the virus, because it will mean that the virus hasn't got anyone new to infect. So in the short term, we are about trying to make sure that the virus spread is reduced so the health service can cope. In the medium term, it's about managing that spread and helping to protect people as much as possible. And then in the long term, it's about stopping the virus spreading once we have a vaccine. So, thank you, Dr. Justin. So, वसीम साहब, जिस तरह डॉक्टर साहब फरमाया या दसने पे कि जेड़े साढ़े शॉर्ट टर्म, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म गोल्स जेड़े न, इसकी शिकस्त देने या इसने तू बचने वास्ते और अपने आप की बचाने वास्ते है, जिस तरह वो दसी रहे हैं कि इस तरह करना पेसी, तुसा क्या थिंक करने हो डॉक्टर साहब ने इस हवाले नाल, पॉइंट ऑफ व्यू नाल? जी, मैं बिल्कुल इतफाक करना वा जो डॉक्टर साहब आया कि असां जेड़ा इस वेले जिस वक्त गुजरी रहे हैं कि इस स्प्रेड की कंट्रोल करना, सोशल डिस्टेंसिंग और जेड़ा लॉकडाउन है या कि ये है कि एक ये बीमारी जेड़ी फैलनी पई बहुत जल्दी ना फैलनी पई सी, इसलिए रुकावट बनी जाए। और इसना ये अहम रोल सी कि अस्पताल जेड़े यूके विच न और जेड़ी असां नेशनल हेल्थ सर्विस है, ये बहुत चली सकै। जे मैं जिस समय अगा दस्या सी कि जे रोज़ा नाल मसलन कि लखां दी तादाद विच लोग बीमार होने सन ते सारे अस्पताल जाने ठी, तां एह् नहीं सी कंट्रोल होना। और एक दौर ऐसा भी आया एक तकरीबन महीना पैह्ले जेह्ड़े असां दे अस्पताल अक्सर एह् नहीं सन बोझ संभाली सकने, उ'नें च बड़े मुश्किलात होई गे सन, वेंटिलेटरां दी कमी सी, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई दी कमी सी, और एनएचएस नहीं हैंडल करी सकी। नवे अस्पताल भी खुले गए, लंडन खुला गया, इत्थै बर्मिंघम खुला गया, और वो खुलने विच थोड़ा जिहा टाइम लगी गया। लेकिन
NHS की महफूज रखने विच सब तो अहम गल जी आखने घर रवो, एक दूए तो दूर रवो, एक इसकी रुकावट बनाओ, इस बीमारी ना फैलने नहीं, ये एक अहम चीज सी। लॉन्ग टर्म ज़ाहिर बात है जब तक वैक्सीन ना इसी ये एक किस्म ਦੀ ਇੱਕ परसेप्शन ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਏਗੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀ ਕਦਮ ਮੈਂ ਇਸ ਇਹ ਜੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸਿਨਾਰੀਓ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਇੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੁੱਕਾਂ ਵੀ ਲਿਖਣ ਹੋਸਨ ਇਹਨਾਂ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਰਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਸੋਚੀ ਨਾ ਸਕਨੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਕਦਾ ਹੋਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀ लेकिन इसमें कुछ फायदे भी होए मुझे दसना कि मैं बहुत कम बार जाना लेकिन मैं तमाम जेह्ड़े अपने माड़ी जिम्मेदारी है जेह्ड़ी काउंसल विच मैं लैपटॉप पर बैठिया कांफ्रेंस कॉल वीडियो कॉल पर अस कम कर ही रहा और ए कि एक नवी सिस्टम एक आई है कि रिमोट वर्किंग भी हो रही है और मजीद और भी फायदे इसने विच लिख सन हाँ मुश्किलात ज्यादा हैं लेकिन इस दौर विच काफी असां की असैसमेंट भी होई है दूसरी गल ये है कि असें गी एह् बी एहसास होया है कि केह्ड़ियां चीजां अस मिस करने आं केह्ड़े दोस्तां नाल असां नी इतनी मुहब्बत है कि उ'नेंगी तक्की ना सकने जनाजियां ने भी मैं आगा इक दोस्त गल करी सा कि इतनी बड़ियां हस्तियां फोत होइयां बड़े बड़े जनाजे होन उ'नें बेचारें गी इत्थै चंद लोग सिर्फ उन्होंने करीबी अजीज जेह्ड़े उन्हें जनाजे जाई सके सो काफी मुश्किलात भी होए लेकिन कुछ जगह इंशाल्लाह फायदा हुआ इसी लेकिन जब तक वैक्सीन ना इसी ना इसी लॉन्ग टर्म लड़ाई इस बीमारी ना नहीं होगी So, Wasim sab, kuch comments will include some comments as well. Let's see जी if जी बिल्कुल we have something. So, Councillor Wasim, Muhammad Khan is saying that can City Council play any role to celebrate Ramadan and Eid in the same day? Sir? Something out of interest, out of program, but let's see your views are because we've got a variety of views coming. So. राज साहब ने बड़ी मेहरबानी है इन्हें बहुत जरूरी एक सवाल पूछा और अफसोस होना वा जी हकीकत बात है कि घरां विच कुछ लोग अज रोजा रखा कुछ कल रखसन ये तकसीम हुई भी कम्युनिटी और इस मुश्किल वक्त विच अफसोसनाक चीज है असली कम्युनिटी देखो असी एक सियासी लोग हां जेह्ड़े अस काउंसलर हां सियासी हां ਇਹ ਕਾਉਂਸਲ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਸਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਲਮ ਆ असां एक सियासी कारकुन असां एक हाँ सियासत विच असां शायद कुछ संगी असां एक एक्सपर्ट भी होसन मेन चीज यह है कि असां अपने जेह्ड़े उलमा इकराम उन्हें इकट्ठा किया जाए और कोई थोड़ी जी पिछले चंद साल पहले काफी बेहतर हालात हो गए सन लेकिन आज की थोड़ा जिहा अफसोस होया हुआ है कि एक चीज जी साइंटिफिकली जेह्ड़ा फैसला होना हुआ एक सारी राय नहीं होनी चाहिए साइंस ने मुताबिक असना मजहब है ते मैं समझना कि बड़े बड़े लोगों का शायद मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन जी मस्जिदा का सब तो बड़ा जो अंब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने रोल होना चाहिए इतना बरतानिया विच वर्ल्ड मुस्लिम लीग है और भी बड़े बड़े अदारे ने सो राय साहब मैं मज चढ़ा लेकिन हमेशा के बर्मिंघम सिटी काउंसिल तो वधी तक कम है असा जो रोल अस अदा करी सकते जरूर कर सकते लोकल लेवल लेकिन मैं समझना कि ईद रोजियाना असने it'd be wrong for us to get involved. Thank you. Dr. Justin, that's the comment for you actually from Waqar Aslamkiani. This type of program help us to face certain problems regarding health. Obviously, it does help our community as well. Thank you, Waqar. Um, Basically, obviously, there are a lot of other people, they're commenting maybe somewhere else as well because our comment section is only this one. But like I said, we are live on a number of different platforms. So I'm just trying to checking if I can pick up any message or any comment or suggestion. But hopefully, I will keep checking it. Justin, so now, this is really important question actually from community perspective. Can I ask what is the process to release dead bodies from the dead bodies? How can we release? What is the process at the moment? So there are some small changes in terms of the process for the body to be released.
that's more around the number of people that are dying, which is significantly higher than at any other time we've had before. But as far as I know, certainly in Birmingham, that hasn't been a delay. There haven't been problems in storing bodies, and we have caught up with making sure the death certificates and the release papers are moving through swiftly. And extra staff have been brought in to help manage that. We've worked very closely with the mosques in the city and the funeral directors to work with them on the religious rites around the body after it's died, to minimize any potential risk. There are some risks from a body after someone has died, and that's really from the bodily fluids. And therefore there is advice about what funeral director staff should wear when they are washing the body, for example, and we've advised them that that should only be done by trained staff. And there's been some excellent work by the funeral directors of Birmingham coming together to ensure that people are trained properly about wearing the right equipment, and that the religious leaders across the city have worked together to ensure that the dead can be honoured safely. But as we all, I think, know, the dead would want the living to carry on living, and to not put themselves at unnecessary risk, because their legacy lives through us, living on healthy and well. So वसीम साहब जिस तरह डॉक्टर साहब दसने पे, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सी भाई मोहम्मद खान साहब ने कमेंट्स ने नाल जुड़ी हुई जिहड़ी सी ओ मैं थिंक करना है, मैं महसूस करना है कि ऑब्वियसली मसाजिद विच जेड़ा रमजान हुन तक माशाल्लाह सारे ना स्टार्ट हो गया। एक जिहड़ी चीज असां की सीखनी चाहिए, इसने तो पहले कि असां डॉक्टर साहब ने गल्ला पर अच्छा जिहड़ी सीखने वाली चीज है वो है कि सिख कम्यूनिटी जिहड़ी है उन्हें अपनी बैसाखी जिहड़ी है वो ब्रॉडकास्ट कीती ने वर्चुअल जिहड़ी है, जिसके आने नहीं इंटरनेट पर, जिसके असां अपनी जबान च आने वही, और मुसीबतां जिहड़ियां सारियां वो भी ब्रॉडकास्ट करनियां पियां, नमाज अपनी इसने नाल असां घर बेच पढ़ी सकने, फैसिलिटी है साडे कोल। ते जेड़ा मैं थिंक करना है कि एक फैंटास्टिक आइडिया है। पहले इस बारे दसो कि आइडिया इसकी किस तरह से तकने हो। देखो मैं दाद देना चाहना वा कि जिस तरीके नाल मसाजिद इत्थे बर्मिंघम क्या पूरे यूके विच फ्यूनरल डायरेक्टर्स और कम्युनिटी लीडरशिप जिस तरह कम करी रहे ना, और जिस मुतफिका तरीके नाल कम करी रहे कोरोना वायरस नाल जंग लड़ने दे, ये मैंने खाजी तहसीन पेश करना वा। हर मंडे सुबह 10 बजे और उन रमजान विच 1 तो 2 बजे जो डॉक्टर जस्टिन नाल और मुख्तलिफ सियासतदान भी उस पर बने, तमाम मस्जिद लीडर उत्थे बने, एक जूम कॉल होनी है, जूम एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग कॉल उत्थे होनी है, और जिथे तमाम उत्थे डिस्कशन होनी है कि क्या किस तरह असां सपोर्ट करी सकने हैं, जेह्ड़े गवर्नमेंट ने एम्स ने, लोकल काउंसिल ने एम्स ने, NHS ने एम्स ने, और असां ने जेह्ड़े मजहब विच भी जेह्ड़े असां दी रिक्वायरमेंट्स बिलखसूस जिल्लै कोई डेथ होनी है, असां एक दूए किस तरह सपोर्ट करी सकने हैं। इत्थे जिस तरीके नाल वॉलंटियर सामने आए, जिस तरीके नाल एक खौफ भी है सी कि कोरोना वायरस की जो एक बंदे दी डेथ भी इतनी जल्दी होई जानी है, इसने गुसल की तरह दिता जा सी, दफन किस तरह कीते जा सन, लेकिन जिस तरीके नाल कम्युनिटी बाय एंड लार्ज, एक दो शायद होन विच जिन्ना नहीं कोई मुश्किलात पैदा कीते, लेकिन बाय एंड लार्ज मैं आना कि मुस्लिम कम्युनिटी जिस तरीके नाल अग्गे आई है और जिस तरीके नाल लीडरशिप दसी है, एक बहुत पॉजिटिव साइन है, और इंशाल्लाह अग्गे भी और मामलात विच भी असानी कम्युनिटी की इस तरह यूनाइटेड रहना चाहिए। वॉलंटियरिंग सिस्टम में तकना पिया, फूड बैंक्स, तमाम कम्युनिटीज और असानी कम्युनिटी भी उसमें शामिल है। जिस तरीके ने जेह्ड़े बंदे कम नहीं करी सकने, जिन्हां ने डिसेबल ने, उन्हां की खाना भी पहुंचाना पैना है, उस मार्केटा नहीं जाई सकने, और जिस तरीके ने असाने दोस्त, असाने भैणा भरा, मुख्तलिफ कम्युनिटी ने लोग कट्ठे आई तो उन्होंने मदद करने पैन, एक किस्म ना एक खूबसूरत नेचर एक सामने आई है, द बेस्ट ऑफ बर्मिंघम, द बेस्ट ऑफ द यूके, एक बड़े मुश्किल हालात विच। सो जिस तरीके नाल असां इत्थे स्मॉल ईद पार्क बर्मिंघम विच जेह्ड़ी ईद नमाज होनी है, वो यूरोप दी सब तो बड़ी ईद नमाज होनी जेह्ड़ी है, ग्रीन लैंड मसाजिद जेह्ड़ी है स्मॉल ईद ऑर्गेनाइज करने होने, उन्हें ऐलान करी ओड़ेआ, ज़ाहिर बात है इस साल तो नहीं होई सकनी है, तो असां की हुन और तरीके नाल असां की सेलिब्रेट करने, बल्कि अज मिगी ईमेल आया बिशप ऑफ बर्मिंघम जेह्ड़ा है हैस ऑफ लॉर्ड्स ना भी रुकन है,
वो अक्सर असां की इफ्तार वास्ते बुलाना होना मैं मल्टी फैथ इफ्तार उस हद की बिल्कुल असां की बुलाया लेकिन उस आया कि मैं ऑनलाइन लिंक भेजसां सारे अपना अपना खाना केड़ी इफ्तारी वक्त अपने अपने टेबल पर भेज दिया सारी एक दूसरे गलबात होसी दुख सुख एक दूसरे नाल करसां और इस तरीके नाल अज के इफ्तार होसन सो मुख्तलिफ कम्युनिकेशन मैं हर रोज शामी मेरे दोस्त ने कुछ काउंसलर ने कुछ और साथी ने उन्होंने बेहद असां वीडियो कॉल करने आ हंसी मजाक करने आ शुगल मेला लाने आ सो बल्कि ये ऑनलाइन सिस्टम बहुत बेहतर हो गया बल्कि वसीम जफर साहब तुसां गल्ला की टोकना मादरत करना है उल्टा क्या कहने ने होम पार्टीज समथिंग लाइक दैट दिस इज गोइंग ऑन एवरीवेयर माड़ियां अपनी नीसीज जेड़ियां पतरियां भनैयां वो सारे जनाब ग्रुप बनते आ 10-12 बैठियां होनियां निक्कियां निक्कियां ते मैं क्या बच्चों क्या करने हो है मामू इत्थे जड़ा है असां हुन इत्थे गल्लां करने आ ते मैं क्या है मामू दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ लाइफ नाउ सो वी गोटा लिव विद इट मैं दैट्स फाइन we have to live with it. Of course, we want their safety and security and everything. Now, Justin, so now my last question. As you know, the ghusl for bodies, is he allowed? Yeah, so there is guidelines around the ghusl, the washing of the body, and the funeral directors have worked really hard to find ways to do this in a way that protects the individuals doing it while also respecting the religious right. The guidance has changed and evolved. So at the beginning of the outbreak, we were saying don't do it because we didn't know how much risk there was from the dead body. Now there is better guidance and it's a much clearer message. But it is a different type of body washing. So funeral directors are not using a hose to wash the body. They're using a cloth. They're wearing gloves and aprons and face masks. And you only doing it with trained members of staff and volunteers. And this is all to reduce the risk of the disease spreading from the body. But it is also about reducing the risk from the other people in the room. And my understanding from what they have shared with me is in the past, family members might have been present and there might have been 4 or 6 people involved, perhaps. But that obviously those people can't be 2 meters apart over the body. It brings them too closely together. So it can be done safely, but we really are asking that is by people that are trained and have the right equipment. And certainly in Birmingham, I'm confident from all the hard work the funeral directors have done that is the case. Thank you, Justin. Consider Wasim, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੁਸਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫੋਤ ਹੋਣੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਸਲ ਦੇਣੇ ਔਰ ਗੁਸਲ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਸਲ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਆ SOP ਜਿਹੜੇ ਇਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਣ ਇਹ ਠੀਕ ਆਣਨ क्या बात हो इस बारे च बिल्कुल मैं तकिया कि इत्थे काफी मसाजिद ने वॉलंटियर मंगे सन बड़े आलम शेख जेह्ड़े खास तौर सोशल मीडिया पर रिक्वेस्ट कीती सी कि नौजवान बिल्कुल जेह्ड़े फिट जिन्हां दी सेहत ठीक है ना वो सामने अचन क्योंकि एक फैमिली जेह्ड़ा डेथ होनी है कोरोना वायरस की वजह शायद वो बंदा घरा विच रेहा होवे तो बाकी फैमिली सोशल आइसोलेशन च होनी है सो उन्होंने करीबी रिश्तेदार वो गुसल नहीं दे सकने जेह्ड़ा अक्सर असां इस्लामी तरीका भी है कि करीबी रिश्तेदार जेह्ड़े न वो गुसल देने सो लिहाजा असें वॉलंटियर नहीं जरूरत सी सो काफी मसाजिद ने इत्थै मेरी जो लोकल मस्जिद है लोकल लजाओ सेंट्रल मस्जिद उन्हें ट्रेनिंग की है ना सिर्फ मर्दा नहीं उन्हें औरतां ने भी ट्रेनिंग की है कि गुसल किस तरह दिता जासी और बिलखसूस इस इन्वायरमेंट विच इन्हां मुश्किलातां विच किस तरह गुसल दिता जाना जैसे डॉक्टर जस्टिन आया कि 6-7 बंदे एक बॉडी ने अगे पिछे नहीं होई सकने कि वो 2 मीटर दूर नहीं होणगे वो या वो डिस्टेंस नहीं है एक दूए नाल जेह्ड़ी गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट है सो ट्रेन्ड होना ट्रेनिंग जी सी है बहुत जरूरी सी जी काफी दी गई है और दूसरी जी अहम चीज है जी प्रोटेक्टिव क्लोथिंग होनी चाहिए पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग जी है ना वो बहुत जरूरी है उसने लाने तो बगैर तुम गुस्सल दियो या तुस जनाजे बैरियो भी शरीक होवो ये भी बहुत बड़ी रिस्क है
सो बड़ी मेहनत की थी जी, और तमाम मसाजिद की प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी मिली गया, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी मिली गई है। एक काफ़ी डोनेशंस भी असां ने अपने कम्युनिटी विच होए न। इत्थै ऐसे लोग भी हैं जो पिछले दिनें बर्मिंघम भी बॉडी बैग्स ना काफ़ी प्रॉब्लम पई गया सी, और असां ने अपने चौधरी रासिफ साहब ने उन्हां 300-400 बॉडी बैग्स बड़ी बिज़नेस है उन्होंने उन्हां डोनेट कीते न। लोग बड़े खुले दिलै नाल अग्गै अचने पे और मदद करने पे न। लेकिन ये जेह्ड़ी रिक्वायरमेंट्स ना इस हालात विच इन्हां की फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, और ये रिक्वायरमेंट्स काउंसिल की कोई खास फायदा नहीं होना। असां ये कोशिश करने आं कि लोकां दी जिंदगियां बचाने ते, लोग बीमार ना होन, उ'नेंगी कोरोना वायरस ना लग्गै, एह् कोरोना वायरस ना फैलै, ताकि असां इस बीमारी दा मुकाबला करी सकां। True. Justin, being as a Muslim and British, obviously, I'm really proud of my Britishness and being as a British Muslim and Kashmiri Muslim and British Kashmiri Muslim, whatever we call it. Now, I strongly take pride that my community have a very strong connection with the humanitarian causes, such as food banks. We put a lot of efforts, especially in Ramadan, holy month of Ramadan. We have a really keen eyes on it. As you can see on this one of comment at on our timeline, Brother Noman Kumar is saying, "How can the community help more?" So, Arada, ask this question to yourself. Sure. So the first thing the community can do is stay home in the house that you live in. Don't go to friends and family. Please listen to the guidelines that are there. They're done to protect you and to protect your family. I know many of the mosques financially really still need your donations to do their good works. So do continue to give, especially during Ramadan, to them. And I know also it is a tradition to give food during Ramadan as well. And I would say this year, please donate online and financially to the food banks if you can, to support them, to ensure that the people that need help getting food can get it. If you are able to join up with many of the local voluntary organisations, one of the biggest challenges during this time is for us all to keep our mental health healthy. And the things that perhaps we took for granted before become so much more valuable. Getting a letter from a loved one, getting a phone call rather than just a text message to have a chat is really, really important. So those are all things that I think we can all do to take action and to contribute to the effort to really reduce the impact of coronavirus on everyone. So please do make the effort every day to connect with someone you care about and make time for a conversation, because it really matters now. ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਜੈਨਰਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਸ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਬਿਲਖਸੂਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਭਰਾ ਆ ਜਾਵੇਦ ਇਕਬਾਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੋ ਮਾਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਡਿਆਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਰਪੁਰਿਆ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਫਤ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਮਲੈਸ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਏਰੀਆ ਨੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਲਾਣੀ ਹੈ। क्वेश्चन ये है कि असा जड़ा जाहिर बात है, एज मच असा लाइक करने डोनेट करना, बंदे की खाना खिलाना, और मैं पसंद करना अपने नेबर जेडे गोरे अंग्रेज जेडे, मैं उन्हें की चाहना है कि घर बनते है रोटी टूड़ा समोसे पकौड़े में चाहिए प्लेट देना चाहना है, सारा कुछ है, एक पार्ट ऑफ सारा कल्चर भी है। वसीम साहब, सवाल ये बनना है कि असा जिस तरह डॉक्टर साहब दसिया कि किस तरह और केड़े तरीके समझने हो असा हेल्प करी सकने हैं, जिसने विच असानी सेफ्टी भी रवा, सिक्योरिटी भी रवा, एक तो ये चीज, दूसरा असा जी गवर्नमेंट गाइडलाइन है उसकी भी असा फॉलो करने रवा। जिस तरह डॉक्टर साहब दसिया, तुसा भी कोई इस तरीके ना कोई असा की गाइड करी सकने हो? पैह्ली गल्ल तुसां जावेद भाई ने जिक्र कीता, ये लोग जेह्ड़े न, जावेद होई गेआ, होर भी इन्हां दे संगी होई गे न, एह् असां दी कम्युनिटी दे बहुत बड़े असासे न। जिस तरीके नाल एह् वॉलंटरी खिदमत करी रहे न, फी सबिल्लाह खिदमत कर रहे न कम्युनिटी, और सिर्फ मुसलमानां दी पूरी कम्युनिटी ना, असें फख्र होना वा कि इ'यै जेह् असां दे नौजवान हैन, और
मर्द औरतां दोए असां दी कम्युनिटी विच बड़े बड़े लोग न। इस वक्त असां बर्मिंघम विच जेह्ड़ी काफी लोग न असां उ'नें गी फूड हैम्पर दे रहे हैं और इक अदारा है द एक्टिंग वेलबींग सोसाइटी टोज उ'नें गी आखने इन शॉर्ट विच तमाम जेह्ड़े फूड बैंक न बर्मिंघम च उ'नां दी कोआर्डिनेशन विच असां करी ओड़े ते एह् काफी लोग असां ने भी उ'नां ने थ्रू उ'नें गी डोनेशंस भी देने उत्थै वॉलंटियर भी करने ओह् असां दी एह् कोशिश है बर्मिंघम च कोआर्डिनेशन बेहतर होऐ जिस बंदे गी जरूरत है ना ओह् टोज नाल राबता करसी ओह् लिस्ट बनाने पेन और तकसीम करने पे खाना पूरी सिटी विच मुख्तलिफ फूड बैंक्स नाल मिली ता जरा इस वक्त कोआर्डिनेशन की जरूरत है और पिछा जब बिल्कुल को महीना पहले बर्मिंघम में तमाम जो फूड बैंक्स हैं उनकी सख्त जरूरत सी फूड की और असां लोकां काफी उन्होंने मदद की है सो मैं ये रिक्वेस्ट करसा कि तुसां खाने ना एक दूए ने तकसीम करो कि इस दूए ने घर जासो प्लेटां एक दूए देसो इसने भी बहुत बड़े रिस्क फैक्टर्स होने तुसां मेहरबानी करी ता जेह्ड़े इत्थै बर्मिंघम विच फूड बैंक्स न उ'नें गी चाहिदा फूड डोनेट करो या उ'नें गी फाइनेंशियली उ'नें गी पैसे दियो ताकि वो फूड खरीदी सकन और भी असां ने आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान विच बहुत मुश्किलात न लोग जेह्ड़े दिहाड़ियां लाई ते रोजी कमाई सकन शायद उस तरीके नाल नहीं कमाई सकने इस वेल्लै क्योंकि लॉकडाउन इक किस्म दा उत्थै भी है उ'नां दी भी मदद करो हर इक असां ने अपने अपने ग्रां विच गरीब उत्थै मौजूद न उ'नां दी भी मदद करो पैसे भेजो रमजान दा महीना है जिस तरीके नाल पैह्ले भी मुस्लिम कम्युनिटी दा रिकॉर्ड है बरतानिया विच जितने डोनेशंस मुस्लिम कम्युनिटी करनी है देनी है चैरिटी च कोई और कम्युनिटी नहीं करनी है इस्सै तरह इंशाल्लाह इस साल भी मुस्लिम कम्युनिटी दिल खोली ते डोनेट करसन इत्थै भी डोनेट करो अपने ग्रां विच आज़ाद कश्मीर विच पाकिस्तान विच जिस थुआढ़ा तल्लक है जित्थै जित्थै गरीब लोग हैं उ'नां दी मदद करो इ'यै एह् जेह्ड़े असां देसां ना एह् मदद करसां फी सबिल्लाह ते अगली दुनिया विच अगले जान इ'यै चीज़ां असां गी हेल्प करसन कि असां कुस नी मेहनत कीती है कुस नी सपोर्ट कीती है इस मुश्किल वक्त विच सही है वसीम साहब तुसां जिक्र कीता ते टोज नामे वेबसाइट जिहड़ी है तको फटोफट जी जी लोड़ी ते बिल्कुल मैं रखी हुई है so just as you can see as well this is very important to mention and acknowledge their role and their great work as well and we really very much appreciate their hard work as well um, Justin, would you like to shed some light on TO's role and activities? So the Active Wellbeing Society are working with Birmingham Council of Voluntary Sector Services to coordinate across the voluntary sector. And the particular bit that TORs do is working across the food banks in the city to help coordinate them. The council has supported them. We put additional money in to buy extra food to support the food banks because obviously donations were reducing. And just last week, I joined a call with all the different food banks talking together. And what was brilliant was to see so many of the mosque food bank representatives on that call. Several of them have come back to me and said actually how brilliant this has been, because sometimes we have food in the north of the city, sometimes in the south or in the east or in the west, but it's not always in the right place at the right time. And by working together, we've been able to move food to where it's needed. They've also worked really hard to make sure that the food packages are respectful of people's religion and their culture. So predominantly they're vegetarian, but they take into account where they can halal, for example, as well. And I think one of the things that will come out of this, which is positive, is that the food banks of the city, including those of the mosques and the temples, will all continue to talk to each other, continue to work in this collaborative way to make sure that the most vulnerable have access to food. And that's an amazingly positive legacy of what is a really challenging time. वैद साहब मैं एक जरूरी गल करना चाहना जिस सुनी इजाजत होवे जी प्लीज हुकूमत ब्रिटानिया ने हुकूमत ने 1.5 मिलियन बंदियां की यूके विच खत लिखिया सी कि तुसां 12 हफ्ते 12 वीक्स तो कर रवो सो शील्डिंग करो तुसां की ऐसियां बीमारियां तो बाहर ना जाई सकने फिर लोकल अथॉरिटीज पूरे यूके विच हिदायत मिली सी गवर्नमेंट दी तरफों कि ये जेड़ा 1.5 मिलियन जेड़े डेटा दिता गया सी कि जेड़े तुसां ने एरिया विच अचने ना उन्हां की खाना तकसीम कीता जाए सो बर्मिंघम सिटी काउंसिल जेह्ड़ी है ना एह् जेह्ड़े शील्डिंग जेह्ड़े लोग शील्डिंग करने पे ना उन्हां की असां डायरेक्ट खाना तकसीम करने आ
ठीक है वो असानी जिम्मेदारी विच अचना वा वो जेडे असाने एरिया विच असा बर्मिंघम में कोशिश कीता वा क्योंकि असानी काफी मुस्लिम कम्युनिटी काफी इत्थै बड़ी तादाद विच उन्हां विच भी काफी लोग शील्डिंग विच न कि असां सिर्फ हलाल फूड भी उस पैक विच देना कीता वा कौंसल दी जिम्मेदारी है लेकिन कौंसल दी जिम्मेदारी तो बाहर भी बहुत ऐसे लोग ने जिन्हें की खाना नहीं मिली रहा तो ये असा फिर बर्मिंघम वॉलंटरी सेक्टर काउंसिल और एक्टिव वेलबीइंग सोसाइटी और तमाम जो फूड बैंक्स उन्हें इकट्ठे करीता है ये मेहनत की है ताकि उन्हें की फिर असा उन्हें की भी असा मदद करी सका सही है सो ए जी तुसां जिक्र किया लैटर ना तो मैं दसी ओड़िया दोस्तों की भी दसना चाहना है कि जिन्हें नहीं तकिया जाए जेडे दूसरे मुल्कों में तकड़े पे या वतन में तकड़े पे सो आई जस्ट लाइक टू शो देम इज वेल दिस इज द गवर्नमेंट wrote to every single citizen of this country ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ਾਤ ਜਾਂ ਖਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ क्या कुछ करना है क्या कुछ गवर्नमेंट करी रही है किस तरह इसकी शिकस्त देने या हराने वास्ते असा कम्यूनिटी जी है अपना रोल प्ले करनी है उसकी कितना इंपॉर्टेंट है उसका रोल सो ये सारिया चीज़ां जी इतने वज़ीर आज़म या गवर्नमेंट जी है लोगों की दसियां और एक खत जड़ा इट वेंट टू एवरी सिंगल हाउस होल्ड इन यूनाइटेड किंगडम Justin, I have a comment for you before I close up and before we finish. This is very important. And Wasim, I also ask you to comment as well. इसने विच जड़ा है first of all जावेद इकबाल साहब acknowledged and thank you for your kind word. Wasim Bhai has said the more we work in a collaborate the more successful we will be. सो गठिया काम करसा तो मजीद जी है असा कामयाबी भी लभसी असा की दैट इज रियली समथिंग बस नुमान कमाल साहब ना कमेंट जड़ा अपना घरै विच जवाब किनसा तो घरै विच सवाल भी करसा लेकिन जस्टिन आई एक्चुअली थ्रो दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ एज वेल so the people are coming from Pakistan and Azad Kashmir and across the world back to UK the government of United Kingdom, what sort of safety measure is putting in place? Can you? I know it's out of sometimes the question are slightly, yeah. So is as I just so I understand it, this is the question about bringing people back who are British who are in Pakistan or in other countries, or India or wherever this country. Yeah. So and how are we protecting them when they do arrive back? What sort of measure? Yeah. So there is a national program to try and bring people back if they're able to and they want to come back. As everyone watching will know, it's very difficult to get a plane anywhere at the moment. And so many British citizens were trapped abroad and the government's been trying to arrange to bring them back. In terms of when they come back, they should be getting advice from the airlines about what to do, and they will probably find that on the plane the planes are not seated as normal, that people are seated further apart as well. It won't necessarily be the luxury flight that you're used to coming back either. Once you come back, if you're coming back from a country that has a similar kind of outbreak as we do, and in reality most of the world is in the same place now in terms of coronavirus. In general they're either as bad as we are or they're slightly better, so the risk is much less from them to us as from us to them, if that makes sense. That's perfect. So in terms of coming back, it's all the things that we're asking everyone to look out for. If you get a temperature or a cough, you should stay at home for 7 days, and your household should stay at home for 14 days. But I think at the moment, from those countries, particularly Pakistan, the epidemic there is similar to here. So it is not an additional risk. It's more the challenge of trying to get a plane. So I've got a couple of more questions, which is I'll try to squeeze in if I can. So Justin, why is the Birmingham basically council only allowing 6 people to attend a funeral while the guideline is for up to 10 people? Sure. So the national guideline doesn't have a number in it.
different councils have made decisions on different numbers of people. In some parts of the country, it is only 2 people or no people around allowed to a funeral or a cremation. In Birmingham, the department that looks after this looked at the space that we have. So how much space there is around a grave and how much space in the chapels. And it's not just the 6 people from the family, it's also the staff. So the funeral director staff and the imam or the pastor who's conducting the ceremony. So once you add them in, you get to 10 pretty quickly. But it was based on a risk assessment of the physical space and the average space that we had across the different settings of the city. Some are bigger, but we had to do it so that we had a single number that made sure everyone was safe. We know this is difficult for everyone. It was not a decision that was taken lightly, and it is one that has been continually reviewed. But it is done to protect the living, both the staff that work in those facilities, as well as the mourners, and to protect the living to carry on living while being as compassionate as we can to honour the dead. So, thank you, Justin. Wasim साहब, तुसां जड़ा आ मैं जिस तरह गल्लां बुझियां डॉक्टर साहब दियां काफ़ी सारियां तालीम असां हासिल कीती, एजुकेट होए हैं, बहुत सारियां चीज़ां लर्न कीतियां. एक जिहड़ी चीज़ मैं लर्न कीती है जिहड़ी नवीं सी माड़े वास्ते ऑब्वियसली एक तां फ्यूनरल ने हवाले नाल गुसल ने हवाले नाल समथिंग इज न्यू फॉर मी इज वेल. दूसरा अटेंडेंस ने हवाले नाल कोई दसां दा नंबर कोनी है उत्थे. ये डिपेंड है मकामी इलाकियां पर, उसने पर मसीती च कितनी जगह आ, उसने जनाजा गाह विच कितनी जगह आ. ये सारियां चीज़ां ये बड़ियां इंपॉर्टेंट सन जिहड़ियां कि असां की बहसीत कम्यूनिटी जानी. वसीम साहब दसो है कि इसमें तो पहले कोई कमर शमर को नहीं, असां क्लोज भी करना है, रोजे ने भी टाइम नजदीक लगे सवा माड़ा लगे है तुसां ने पास अज शुरू होसी बरकैफ. ये दसो कि डॉक्टर साहब ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ मैसेज भी अच्छे पे बड़ियां पसंद कीतियां ने, और माड़ी भी ख्वाहिश है कि डॉक्टर साहब की असां फिर भी इनवाइट करा. और क्या तुसां कोई इस तरह ना ख्याल करने हो कि असां इस किस्म के प्रोग्राम जेडे कोई रेगुलर बेस पर करी सकां, खास कर स्पेशली रोज़ियां ने महीने विच? भाई साहब बिल्कुल असा पहले दोबारा थोड़ा शुक्रिया अदा करना चाहें कि एक प्लेटफॉर्म असा की देती है कि अपनी कम्युनिटी ना असा गलबात करी सका और मुख्तलिफ इंग्लिश विच भी और बिलखसूस अपनी मादरी जबान विच असा गल करी सका. और वो लोग जेडे असा ने जेडे बुजुर्ग ने बिलखसूस जिन्हें की अंग्रेजी थोड़ी मुश्किलात पैदा होने वो आसान तरीके नाल समझ सकन. एक असा इत्थे लोकल भी कल इंक्वायरी हुई है कि एथनिक माइनॉरिटी दी डेथ ज्यादा की हुन गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया, आज लेबर पार्टी नेशनली भी ऐलान करेगी, असा भी इंक्वायरी करसा. और एक चीज बड़ी क्लियर आई रही है कि कम्युनिकेशन ना बड़ा इशू है कि गल्लां जेहड़ियां न नहीं पुजनियां पियां अदारियां तो कम्युनिटीज की के लैंग्वेज बैरियर्स. तो जिस तरीके नाल इस खूबसूरती नाल आज प्रोग्राम होया, मैं उम्मीद करना जेहड़े सुने नाज़रीन उन्हां तुसां तो मैं भी बहुत कुछ सीखिया तो उन्हां भी बहुत कुछ सीखिया उसी. तो बिल्कुल मैं हाज़र हां इंशाअल्लाह और भी प्रोग्राम करने ते असां तैयार हां. और डॉक्टर जस्टिन ने भी बड़ी मेहरबानी है, ये भी अच्छे वास्ते तैयार हो सकता. और भी जैसे लोकल जो चीफ एग्जीक्यूटिव है असन अस्पताल ने उन्हें भी बुलाई सकते हैं. और भी जेडे मुतलका अदारे ना इस सिस्टम विच असां जेडे बिलखसूस इस कोरोना वायरस ने जेडा इंपैक्टेड न और जेडे कम करी रहे फ्रंट लाइन उन्हें की बुलाई ताकि जेडा इंफॉर्मेशन है असां तो उन्हें तक पुजी जाए. एक मैं निकी गल करसा वो जेडा हमारे घरों सवाल आया सी हमारे भाई ने नुमान कमाल साहब, उन्हें एक बड़ा अहम सवाल पूछा सी जिस बंदे वापस आई रहे. हुकूमत की ना कई जगह बहुत अच्छा काम करी रही है, लेकिन जितना मैं समझ रहा थोड़ी जी फेलिंग है उसने भी जरूरी है कि असा उसकी पॉइंट ऐड करा. जिला बंदे वापस आ रहे ना उन्होंने कोई इतना टेस्टिंग नहीं हुई रही, जहाजा पर लेने सीधे बाहर. मेरी आंटी नहीं था बिल्कुल मेरे गमांड रहने वो पिछले दिन पाकिस्तान तो आए, जहाजा पर कोई टेस्ट नहीं हुआ, बिल्कुल बाहर आई गए. ठीक है. कुछ मैं एमिरेट्स में सुनिया सी शुरू जिला उन्होंने फ्लाइटा जा रही सन के दुबई ले उन्हें इंतजामिया टेम्परेचर चेक करने से उन्हें कोई सिस्टम आया सी जा एयरपोर्ट बंदे चेक करने सन तो जिसे को प्रॉब्लम होनी सी उसकी साइड पर खड़ी था उन्हें की एडवाइस भी देने सन. हुकूमत हर काम नहीं करी सकनी है, असा की कम्युनिटी की अपना भी सोचना पैसी, अपने आपा की भी बचाना पैसी, ऐसे भी कदम उठाने पैसे की टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स. मैं उनसे की मिसाल देना, मैं टाइप 2 डायबिटिक हां जिसमें मैं आगे दसिया.
ठीक है, मैं बहुत केयरफुल हाँ कि मैं पिछले 6 हफ्ते बहुत कम बार गया वहाँ, ठीक है, क्योंकि मैं एक वनरेबल ग्रुप विच सां। इस तरह दे जेह्ड़े सुनने आह्ले तकड़े आह्ले वनरेबल ग्रुप च ना, बिलखसूस वनरेबल ग्रुप, लेकिन हर बंदे गी एहतियात करनी चाहिदी, अपने आपे गी इत्थै बचाओ। एह् जेह्ड़ी असां एह् कानून बनाए ने 6 या 10 या एह् वो, एह् बंदे गी बचाने वास्ते ऐ, क्योंकि एह् बंदे तो बंदा इक बमारी फैलनी ऐ। ते इंशाअल्लाह जिल्लै असां इस बमारी नाल मुकाबला करी ते कामयाब होसां, ते ओल्लै फिर बाकी सिस्टम दोबारा बहाल भी होसी, इक दूए नाल जफ्फियां भी लासां, खाने भी कट्ठे खासां, ईदां भी बनासां, रोजे भी रखसां, इंशाअल्लाह जे अल्लाह ताला दा हुक्म होया ते एह् सारियां गल्लां होसन। लेकिन प्लीज एहतियात करो, अपने आपे गी बचाओ, अपनी फैमिली गी बचाओ, कम्युनिटी गी बचाओ, घरे रवो प्लीज, मेहरबानी करियै। True. Justin, what would be your last message here to sum up, summarize everything what we said today? So I think my final message would be to say, stay safe, stay home. This year we will celebrate Ramadan in a way that has never been celebrated before, but we will come together again on the other side, and there will be a happier time to come. But now we all have to do our bit to keep ourselves safe, our family safe, and the community safe by staying at home, washing our hands, and not touching our face. Thank you very much, gents, Wasim and Justin. Thank you very much for coming in the show. It was first English show in my entire life, actually. I mostly do my show in my own native language and Urdu, of course. But obviously, it was absolutely pleasure, and I have learned a lot of things. I really appreciate Dr. Justin and Wasim Zafar. So, दोस्तों आज मेरी बैठक जो है वो सुनने सामने आती है यकीन तौर पर बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सीखने का मौका पाया अगले हफ्ते डॉक्टर जस्टिन और बाकी जो दोस्त जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट काम करने मैं चाहता अपने प्रोग्राम में पूरा सारे दोस्तों प्रोग्राम में कमाल करने आती है पार्टिसिपेट करने में रोज़ा तो माशाल्लाह रोज़ा जो है वो ब्रेक थोड़ा जगह पे मतलब 10 मिनट 5 मिनट इंशाल्लाह रोज़ा खोलना तो फिर सारा कुछ ठीक हो जासी अपना बहुत ख्याल रखे और अपने इस दुनिया में समय का रोज़ा है उनकी हैप्पी रमज़ान मुबारक जिन्होंने जो कल है उनके दुआ मुबारक दूसरे दुआ नी करूं इसमें अल्लाह रहम करे असाने भाई को अल्लाह ताला रहम करे और अल्लाह ताला सारी इस्लामियत है सारी खुशहालियां है और इस रोज़े महीने में बिलखुसूस अल्लाह ताला करे अपनी खुसूसी मकसद अल्लाह समझा और ये मुसीबत असाने मुल्क भी अपना भाई मुल्क भी जो कितना गुजरना क्या अल्लाह ताला उसी दूर करे अगले कुछ प्रोग्राम जो है फिर कसा अपने दोस्तों नाल और कोशिश करता कि इस सिलसिले के ज़्यादा जारी रखें बाकी जो डिपार्टमेंट में बहुत शुक्रिया की इजाज़त अल्लाह सुनने वाला है